Hello everyone. Now in this video we'll see how to convert the Moore machine into the Mealy machine. So already we have discussed about the conversion from Mealy to Moore machine and हमने वहाँ पर examples भी देखे थे. Let us come across the reverse way conversion from Moore to Mealy machine. तो देखिए इस वाले को convert करने के लिए we'll start with the first node as Q0. Q0. Now you can see Q0's नेक्स्ट स्टेट इज Q0 व्हेन द इनपुट इज B. अब इस वाले केस में देखिए ए बी जो है वो इनपुट है और आउटपुट जो है ब्रैकेट में है. तो कंडीशन क्या है देखिए Q0's नेक्स्ट स्टेट इज Q0 विथ इनपुट B और आउटपुट है देखिए 0. तो हम इसको लिखेंगे Q0 का नेक्स्ट स्टेट है Q0 प्रोवाइडेड दैट इनपुट B और आउटपुट है 0. सिमिलरली Q0 का नेक्स्ट स्टेट है Q1 with input A and output 0. So we'll draw this Q1 with input A और आउटपुट है 0. ये वाला आउटपुट कंसिडर करना है, आउटपुट इज 0. अब हम Q1 की तरफ चलते हैं. Q1 की दो पॉसिबिलिटीज देखिए. Q1's नेक्स्ट स्टेट लूप देखिए Q1 ही है व्हेन इनपुट इज 1. Q1's नेक्स्ट स्टेट इज Q1 विथ इनपुट 1 और आउटपुट है 0. तो इसको हम लिखेंगे A by 0. Similarly, Q1's next state is Q2 with input B और देखिए अब Q2 का आउटपुट है 1 तो हम इसको लिखेंगे B by 1. Similarly, from Q2's next state is Q1 with input A. So Q2's next state is Q1 with input A and आउटपुट देखिए ये वाला आउटपुट 0 है. तो हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेट है उसका जो आउटपुट होता है वो हमें इसके अक्रॉस रखना है. सिमिलरली Q2 का अब देखिए Q2 का नेक्स्ट स्टेट है Q0. विल ड्रॉ दिस ऑल्सो. दिस इज इट विथ इनपुट B. अब देखिए व्हेन द इनपुट इज B इट इज मूविंग टू Q0 जिसका आउटपुट इज 0. सो दिस आउटपुट विल बी 0. सो दिस विल बी आर कन्वर्जन फ्रॉम Moore machine into our Mealy machine. तो ये वाला था Moore machine and now we got a Mealy machine. Yes, I hope you are getting it. It's quite simple question, just show the direction and mark its output terms. So this will be our conversion from Moore into Mealy machine. Let us take another example on the same. So this is a second question on conversion about Moore to Mealy machine. So this is basically our Moore machine. Let's start with the same process. I will be taking the first node as A. Now A's next state is A when the input is 0 and at that time the output is 0. तो हम इसको लिखेंगे 0 by 0. Similarly A का next state है B when its input is 1 and आउटपुट है देखिए 1. तो हम इसको लिखेंगे 1 by 1. सिमिलरली B का देखिए B का नेक्स्ट स्टेट है C when the input is 0 and its corresponding output is 0. In the reverse way B अगर मैं ट्रेस करूँगा when the input is 1 it goes to A. So B's next state is A with condition input is 1 and output should be 0. So it is 1 by 0. Now we'll come across C's state. C's when the input is 0 its next state is B. So C का next state है B when input is 0 and at that time its output should be 1. Finally C का अगर हम देखेंगे C का next state है A when input is 1. So we'll be drawing C's next state is A when the input is 1 and corresponding output चाहिए 0. So it is 1 by 0. So this will be our Mealy machine and this will be our expected answer. So we have converted a Moore machine into a Mealy machine. So such kind of questionnaires we can expect when we are converting a Moore machine into a Mealy machine. I guess this is one of the simplest methods
फॉर द कन्वर्जन्स। हमने देखा था मिली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करते समय, सो वी वेर सपोज टू गेट एक्स्ट्रा नोड्स, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा नोड्स नहीं आते। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कन्वर्टिंग ए मूर मशीन इनटू ए मिली मशीन। थैंक यू।